Hello everyone. Today's video is specially for our younger viewers and this is on demand for students studying in class 9th. We'll be talking about the fundamental unit of life part 1. Subsequent parts will be uploaded soon. What is the fundamental unit of life? In order to understand this, you must understand the meaning of term fundamental. फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट, एक ऐसी बुनियादी चीज जिसके ऊपर दूसरी चीजों का डेवलपमेंट डिपेंड करता है. तो सेल्स आर दोज बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स अपॉन विच द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड. Okay, and this is why cells are considered as basic building unit of any organism. मतलब सारे organism cells से ही बने होते हैं. To understand this, we can take an example of a structure of a house wall. एक दीवार में आपने देखा होगा it is made up of numerous bricks. Each of this brick is a building unit. इसी तरीके से एक organism भी सेल्स से बना होता है और हर सेल उसकी बॉडी का बिल्डिंग यूनिट होता है. लेकिन कई सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर यूनिसेल्युलर, वो एक ही सेल के बने होते हैं एंड दे आर एबल टू लिव लाइफ ऑन देयर ओन. But a lot of multicellular organisms are also there where each and every cell is considered as a basic building unit of that organism. To talk further, if you look into microscopic image of an onion peel, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखते हैं. All these structures are similar to each other. ये एक जैसे दिख रहे हैं. These are cells. और it doesn't depend on the size of onion. आप बड़ा onion लो, छोटा onion लो, उसके peel में you will get to see the same kind of structures. So cells are like each other. Let us talk about some of the historical aspect of cell. Robert Hooke was the first person to observe cells under a primitive microscope. In 1665, Robert Hooke observed the cells in a cork slice which he obtained from bark of a tree. He actually observed dead cells and he called them cells because the empty chambers appeared as a small room, which means cells in Latin. Antony von Leeuwenhoek in 1674 was the first person to observe free living cells in pond water. Thereafter, in 1831, Robert Brown discovered nucleus. Purkinje in 1839 observed protoplasm, that is fluid substance of the cell, and coined the term as well. Cell theory was a joint effort by three scientists. It was Schleiden and Schwann in 1838 and 1839 respectively who observed and studied cells and therefore stated that all plants and animals are composed of cells and cell is the basic unit of life. It was further expanded by Virchow in 1855, saying that all the cells arise from pre-existing cells. With the advancement in microscopy, electron microscope was discovered in 1940, and now it became possible to observe the complex structure of cell and the cellular organelles. So we can say that invention of magnifying lenses and microscopes actually led to the discovery of microscopic world. Here you can see the difference between simple and compound microscope. A simple microscope is a really simple and basic arrangement where a convex lens is used to form an enlarged and erect image of the specimen. Compound microscope on the other hand comes with high resolution and uses two sets of lenses. Not only this, there are more differences. You can see the structure is really complex. It also uses condenser lens. It also uses an illuminator, which is not present here in the simple microscope. So overall, compound microscope is used to get high resolution of the specimen's image, and simple microscope is used for basic purposes. Cells are of two types.
Unicellular and multicellular. Unicellular cell is where a single cell constitute the whole organism. जैसा कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया के केस में हम देखते हैं कि एक सिंगल सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है. इनको यूनिसेल्युलर इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनि मींस सिंगल, राइट. अब जैसा यहाँ एग्जाम्पल में पैरामीशियम में दिखाया गया है कि इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द all sort of life processes, right from capturing prey to digesting food or फिर excretion, everything is taking place in a single cell, actually the whole organism. On the contrary, um, multicellular organisms में there are many cells which are grouped together in a single body, और फिर cells का function अलग अलग हो जाता है. So there is proper division of labor among the cells which forms various body parts. ऐसा हम लोग फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स के केस में देखते हैं. हम लोग भी मल्टीसेल्युलर, ह्यूमंस भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. बट each and every multicellular organism actually originates और comes from a single cell. एक सेल डिवाइड होकर के ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनाता है. तो हर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के शुरुआत में एक सिंगल सेल होता है जो कि फिर डिवाइड होता जाता है और डिवाइड होकर के वो नए सेल्स बनाता जाता है जो उसके जैसे ही होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं. So it divides further, 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 and then eventually forms the whole organism. So this is why the third statement of cell theory is that all cells come from the pre-existing cells. On the basis of size, shape, and function of cells, we have categorized different types of cells. ह्यूमंस में और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में कई तरीके के सेल्स होते हैं. जहां ये एग्जांपल दिखाया गया, नर्व सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. इसके अलावा भी बहुत तरीके के सेल्स होते हैं. सो अ लॉट ऑफ टाइम द शेप ऑफ अ सेल इज फिक्स्ड. जैसे कि नर्व सेल्स, इनका शेप मोर और लेस फिक्स्ड होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक है नर्व सेल्स का, ठीक है. बट बहुत सारे ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनका शेप चेंज होता रहता है, लाइक अमीबा. अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता. लेकिन हर तरीके के सेल का कुछ बेसिक फंक्शन है. जैसे नर्व सेल्स, दे आर इन्वॉल्व्ड इन सिग्नल ट्रांसडक्शन. बोन सेल का कुछ और काम है, ब्लड सेल का कुछ और काम है, मसल्स का कुछ और काम है. तो देयर इज डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हर सेल का जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी में, उसमें जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है. इसी तरीके से डिविजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन अ सिंगल सेल. सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे कुछ ऑर्गेनल्स का काम है डाइजेशन, कुछ ऑर्गेनल्स का काम है वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना, कुछ ऑर्गेनल्स का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, एक्सेट्रा. तो एक सेल which is actually a fundamental and basic unit of life, वो अपने आप में सारे के सारे functions को perform करने के लायक होता है. It is able to perform all its life function, all its life processes, because it has these organelles to perform the functions for these cells. और surprisingly and interestingly, किसी भी तरीके के cells हों, no matter what is the type of cell, what is the function of cell, और वो किस organism में present है, plant का part है या fungi का part है या animal का part है, all of the cells will almost have same type of organelles. We'll get to know more about organelles and the organization of cells in the next video. Stay tuned, like, share and subscribe. Thank you.